अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके दिन भी अच्छे गुजर रहे होंगे और आप लोग अपना ख़्याल भी रख रहे होंगे। तो आज की गुफ्तगू हम शुरू करते हैं। तो आज हमारे साथ एक आर्टिस्ट मौजूद हैं। तो पहले तो मतलब जैसे आजकल इंस्टाग्राम का दौर है, हम जूमर्स जो हैं वो लिटरली अपना दिन का आधे से ज़्यादा वक्त रील्स को ही देते हैं या फिर डिस्कवर में घुसे रहते हैं। तो मैंने इनका काम देखा जो मेरे लिए एटलीस्ट बहुत यूनिक था। मतलब मैंने पहले ऑफ कोर्स देखा तो होगा मगर इतनी क्यूरियोसिटी से नहीं देखा कि यार ये क्या चीज़ है। खैर हमारे साथ आज मौजूद हैं बिनुफशीन और अस्सलामुअलैकुम। और बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। और ये करती हैं पॉइंटिलिज्म एंड इनका लास्ट ये चल रहा है मीडिया साइंसेस का, और बाकी ये खुद ही बताएंगी कि क्या करती हैं। As Mazhar ne bataya, first of all, thank you so much. I'm just honored to be here. I'm obliged to have you. So, I am basically, again, as Mazhar ne kaha कि media sciences का last year चल रहा है मेरा. इसके अलावा I have been doing art for about 10 years now. I always knew I was an artist, and I even took it professionally, academically as well in my college years. So, yeah. And other than that, I work in e-com and I'm a regular student along with just being an artist. अच्छा, तो हम स्टार्ट करेंगे पॉइंटिलिज्म के बारे में। मोस्टली जो हमारी आज की कॉन्वर्सेशन होगी वो पॉइंटिलिज्म के इर्द रिवॉल्व करेगी। तो पहले तो बताइए कि ये बेसिकली होता क्या है, यानी मतलब देखने वालों को कि जिनको नई आइडिया कि what it is. Pointillism, so basically it is a technique, it is an art style, and ये जो art style है इसको बाबा आदम के ज़माने में इनके जो बनाने वाले थे उन्होंने इनको डिविजनिज्म बोला था इस art style को, और फिर ये evolve होके आगे more apt to what it is, pointillism बन गया। अभी अगर बच्चों के ज़माने में देखा जाए, हमारे ज़माने में तो इसको स्टिपलिंग आर्ट भी कहते हैं, but it is basically making it's basically making art, making portraits or anything, any kind of art with dots. So you create depth with dots, you fill the whole thing with dots, and there's nothing else but dots. Even your lines are based on dots. And so yeah, that's essentially pointillism or stippling art. अच्छा, what do you think कि modern art में इस art की क्या जगह है? मॉडर्न आर्ट में अब इफ़ यू लाइक डिफाइन फॉर मी, लाइक अगर कॉनोटेशंस पे चले जाते हैं, फॉर मी मॉडर्न आर्ट इज़ सो डाइवर्स. लाइक यू डोंट नीड आर्ट गैलरीज आर स्टिल वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं अभी भी लाइक उनका ट्रेंड है, फॉर द राइट पीपल ट्रेंड है. इवन लाइक हमारे पास यहाँ ईस्ट में मे बी ना हो, लेकिन यहाँ के वेस्ट में आप देखते हैं कि लाइक इट्स वेरी प्रेवलेंट एंड पीपल डू अप्रिशिएट आर्ट. बट उससे ज़्यादा लाइक फॉर अस, अगर मैं अपने एक यंगस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एक मॉडर्न आर्ट को देखूँ, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ डिजिटल platforms and digital what's the word for it, like the digital technology. Basically it has a very वो influence. पहले आपके पास art galleries होती थी, अब भी हैं, लेकिन अब आपके पास digital art galleries हैं. आपके पास Google Arts and Culture है. Google Arts and Culture पे आप दुनिया की किसी भी जो है म्यूजियम को जो है virtually देख सकते हो. So in terms of modern art, pointillism is yet another one of the most like very diverse art styles, and abhi the recreation, the the innovation that people are coming up with in pointillism, I think that is where the real value stays. पहले आप नॉर्मल पेपर पे बनाते थे, अब आप ऐसा काम देखते हो कि आपके बैकग्राउंड की तरह देयर इज पीपल आर वर्किंग इन न्यूज़पेपर्स एंड टेक्सचर्ड वो एंड लाइक देयर लाइक पत्थरों के ऊपर, एंड लाइक देयर इज सो मेनी डिफरेंट मीडियम्स जिनके ऊपर जो है ना वो पॉइंटिलिज्म हो रहा है, एंड इट मेक्स इट द मोर इंट्रिकेट कि आपको यहाँ पे पीछे जो है इस तरह की राइटिंग, ये पहले ही आपके पास एक बेस बन रहा है, उस बेस के ऊपर व्हेन यू आर मेकिंग एन इमेज इट इज़ लाइक mind-blowing. Like, so yeah, in terms of modern art, I do feel like the innovation, staying true to the principles of what pointillism started with. So I think that is how it's valuable for modern art. अच्छा, आपकी जो जर्नी थी pointillism की, when did it start, और
कैसे इत्तेफाक हुआ कि आपको पता लगा कि मैं ही कर सकती हूँ? Yeah, so I always मेरी journey कुछ यूँ start हुई कि I was always जैसे बंदा जिस तरह से बड़ा होता है, you always like, you know, your hopes, your passions keep changing. You're like, I started with मैंने air hostess बनना है, and then where I ended up, it's like a wild journey. But yeah, my journey with art started in middle school. Middle school में I was in Ethiopia, and then I was in Sudan, and like, so the international American system, people are really creative. Like even at middle school, my friends were doing amazing things, and I was like, you know what, I want to try that. I did sketching for a long time, and जब मेरा medical sciences का भूत उतरा, तो उसके बाद I went for FA. I moved here to Pakistan, and I went for my college. एंड वहाँ पे इट वाज अ मॉडल कॉलेज, इट वाज हियर इन इस्लामाबाद. एंड क्योंकि वहाँ पे ही आपको जो है आर्ट सब्जेक्ट ज़्यादातर ऑफर होते हैं, नहीं तो हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में तो या प्री मेरिट या प्री इंजीनियरिंग अल्लाह अल्लाह खैर सला या ज़्यादा ICS हो गया. बिल्कुल. सो आई वाज एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड बैक इन द डे. आई वाज लाइक, आई वांट टू स्टडी आर्ट, व्हाई डोंट आई गेट आर्ट इन एनी प्राइवेट स्कूल्स, बट आई डिडंट. असल में ये भी तो एक बना हुआ स्टीरियोटाइप के जो आर्ट करते हैं वो फारिग ही होता है. That I want to touch on. But like, yeah, so there's that. And so I basically went for FA, और FA में मैंने फाइन आर्ट्स एकेडमिकली पढ़ी, और उसमें जैसे डिफरेंट आर्ट थेरी पढ़ी, डिफरेंट मूवमेंट्स पढ़ी, इम्प्रेशनिस्ट, लाइक रियलिज्म एंड इम्प्रेशनिज्म एंड पोस्ट इम्प्रेशनिज्म. So I was very fascinated by the sentiment behind post-impressionist art. पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में बेसिकली इम्प्रेशनिस्ट आर्ट एज वेल, उसका बेसिक प्रिंसिपल ये था कि for me things mean a lot when they have a symbolic meaning. That's just what I get attracted to. So the idea behind the impressionist movement itself, pointillism was a technique that was invented in the impressionist का ज़माना. It was कि चीज़ों की sensations को, I don't remember whose quote this is, but he was an artist as well, कि I think a Spanish artist, कि चीज़ों की sensations को जो है वो आप feel करो, and you need to capture not the picture but the sensation, the feeling. And that's when we moved from realism, बिल्कुल accurate realistic pictures बनाने से we moved towards क्या कहते हैं इसको, इम्प्रेशनिज्म. जो इम्प्रेशनिज्म है उसमें बेसिकली आप यही कह रहे हो कि मैं लाइक आप शायद आगे यहाँ पे थोड़े से एक्सप्लेनेशन के पीसेस भी डाल देंगे सो दैट दे नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो इट इज़ मोर अबाउट जस्ट सिग्निफाइंग कि ये इस तरह की चीज़ें आपको पता चल रहा है कि अच्छा कोई पार्क में बैठा है, कोई नेचर का वो है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली रियलिस्टिक. सो एंड उससे देयर इज़ दिस क्रिएटिव मूवमेंट, क्या नाम है, जो है आपकी पेंटिंग में जो आती है, वैन गो की सारी पेंटिंग, जो बड़ी स्टारी नाइट जो आपकी बहुत मशहूर पेंटिंग है, that is an impressionist painting. And so yeah, it was that sentiment that I really liked about it, and the technique जो मैंने क्लास में की, तो I had made the best piece. It just clicked naturally. And बस उसके बाद मैंने pointillism कभी छोड़ा नहीं, जब भी टाइम मिला तो pieces बना लिए. अच्छा, how would you describe art in the world of art in general? How would I describe art? I think, in today's connotation, you can find art in everything, essentially. Exactly. Like even medical sciences is an art. Like, performing such a procedure, even though it's very scientific. And I just took, again, I'm a student, so I just took a research methods course, and I failed it, and I took it again. And when I took it again, I think I have one of the best, I studied from one of the best professors, and he just has left this mark on me, and I'm making currently a piece for him as well. It's in the process. So the thing is, like, this is what I'm learned from him. Even something as concrete and concise as research is artistic. Because there are patterns to it. There is design to it. So, patterns design a certain way of doing things, then bringing in the thought in it. So, in terms of like, अगर आप universal like art की वो कर रहे हो, तो there's an art even to research. Okay? दो researchers एक book के साथ चल रहा है, एक अपने gut के साथ चल रहा है. There's going to be a difference. You're going to see a difference. So, art in the modern world, I think, in terms of like art. What is art?
बनाने का, जैसे अब आर्ट्स में परफॉर्मिंग आर्ट्स आ जाती हैं, आपका म्यूज़िक आ जाता है, आपका लाइक ये फाइन आर्ट्स आ जाती है. सो लाइक देयर इज़ एंड लाइक a plethora of like different Just things. name it. Yeah, name it. Everything is art basically. So in terms of like modern art, anything that you can express through, any medium that you can express through and that gets to another person, like, you know, makes another person start to think. I think that's art to me. सही. अच्छा, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आर्ट को पीछे छोड़ते हैं. अच्छा, तो पहले मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि यू कोटेड कि आप जब बाहर से आई तो आपने यहाँ पे एक मॉडल कॉलेज में पढ़ा. हाँ. तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था इन कंपैरिजन टू बाहर का एक्सपीरियंस? So, I am a daughter of a diplomat, and so like I spent 14 to 15 years of my life just traveling with my family to different missions and stuff like that. Constantly changing schools, changing countries, and so a different culture in a different place. So Pakistan was also like one of, I started off thinking of it as a different culture that I'm just, you know, बस ये culture अपना था, एक नया experience, बस ये culture अपना था, difference ये था. So although कभी experience नहीं किया था, but I think इसमें एक बड़ी for me एक ही चीज़ ये है कि I am very passionate about culture, history and art and, you know, exposing, and basically मेरा सारा मदार ही मेरे degree का सारा मदार ये है कि I want to, because I'm Sindhi, very passionate about being Sindhi, like praised by कट्टर proud Sindhis किस्म के लोग, and you know, so that makes me a proud Sindhi, and the amount of history and culture that we have, I want to be working on that. So anyways, the contrast we were talking about. Exactly. So it was there were a lot of realizations, a lot of negative connotations that I had in my mind with Pakistan. यार पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान में तो कुछ नहीं है. पाकिस्तान में मेरे अब्बा जी ने मुझसे बात की थी. I will not like, you know, ढके छुपे अल्फाज में बात करते हैं. I was supposed to live somewhere else, and you know, it's a country in the West. It's very like, you know, मेरी ज़िंदगी सेट थी वहाँ पे. Exactly. And the day my dad was leaving, he retired in 2014. The day my dad was leaving, he was like, "Hi, what are you doing?" I'm like, "I'm good." And then my dad went like, "So what do you think about Pakistan?" Out of nowhere, randomly. Me being the person जिसने या तो टॉक्सिक फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली टॉक्सिक, या तो वो, या तो सिंध की गर्मी, और या तो न्यूज़ में आने वाले, you know, धमाके and everything like that, and even the 2010s and like वो तो fresh बोलते थे, वक्त ही ऐसा था. बिल्कुल. So me being me, having the exposure that I had, I went on for 20 minutes. टाइम चाहिए. नहीं. I went on for 20 minutes blabbing about how ridiculous Pakistan is, and how bad Pakistan is. Pakistan में ये है, Pakistan में वो, and my dear father listened to me बड़े आराम से, and then he just told me, pack your bags, you're going with us. मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई. मैंने कहा है, मेरी ज़िंदगी यहाँ पे सेट थी, ये क्या हुआ? And yeah, he just said to me, he's like, बेटे जब तक अपने मुल्क की कदर नहीं कर पाओगे ना, दुनिया में कहीं भी नहीं चल पाओगे. बिल्कुल इसलिए. So when I came here, there were a lot of realizations that, you know, even though मैं अपनी 10th तक I went to private schools, even that wasn't that stark of a difference. There were a lot of cultural shocks, yes, but there were like a lot of क्या कहते हैं उसको, like realizations as well कि like, you know, it's not as bad. Like actually हमारी स्टडीज़ आर हार्डर देन द स्टडीज़, लाइक, यू नो, अमेरिकन स्टडीज़ से काफ़ी हार्ड है. एंड लाइक, यू नो, मैं यहाँ से पढ़ के, एंड देन व्हेन आई वेंट बैक, उससे पहले एक बार मैं यहाँ से 1-2 क्लासेस पढ़ के, एंड देन आई वेंट बैक पीछे, एंड मैंने वहाँ पे जाके दिया, एग्ज़ाम दिया. दे वर लाइक, शी इज़ नॉट एग्जैक्टली, एंड वी डोंट यू नो वैल्यू दैट. हम कहते हैं हमारे पास पढ़ना नहीं है. भाई हमें रगड़ा देते हैं, हमें ये रगड़ा देते हैं, और ये इतना बड़ा रगड़ा देते हैं कि वो हमें आगे जाके काम आता है. एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस ऑन स्कूल लेवल है. मैंने 2 क्लासेस स्किप किए हैं क्योंकि मैंने टेस्ट ही इतना अच्छा दिया, तो उनका यार इसको क्या 4th 5th निकालो, 6 में डालो इसको. सो दैट्स हाउ, लाइक, यू नो, एक वो चीज़ थी. सो या वी डोंट रियलाइज इट बिकॉज हम बाहर नहीं जाते, हम नहीं देखते कि लाइक, यू नो, हाउ डम, लाइक, यू नो, स्टडीज प्ले, यू नो, एटलीस्ट ऑन अ मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल लेवल इन बाहर के मुल्कों में देन यहाँ पे.
एंड देन सेकेंडली मॉडल कॉलेज की आपने जैसे बात की, आई वेंट फ्रॉम स्टडिंग इन 20 लोगों की क्लास टू 75 लोगों की क्लास, एंड दैट वाज आल्सो माय डैड, ही वाज लाइक बेटे क्या करना है आगे? मैंने कहा इंजीनियरिंग करी। दुनिया बदल के, जज्बात बदल के, सब कुछ। बट ये है कि मॉडल कॉलेज रियली हेल्प्स यू। 3 चीज़ें मैंने सीखी मॉडल कॉलेज से। टीचर्स, ऐसा नहीं है कि आप पे मेहनत नहीं करते। यहाँ पे एक कॉन्टेशन है कि हमारे टीचर्स हम पे को तो क्या बस लाइक गवर्नमेंट के टीचर्स क्या ही पढ़ाएंगे। मैंने भी 1 साल गुजारे, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल उल्टा था। अच्छा, सो एटलीस्ट मेरा मॉडल कॉलेज अच्छा होगा। बट लाइक मैंने एक चीज़ नोट की है कि टीचर्स मेहनत करते हैं अगर आप करते हो। बिल्कुल। इफ़ यू गो टू द टीचर एंड अगर आप उनको अपनी वैल्यू करना सिखा दे हो कि भाई मेरा दिमाग इतना चलता है, या आई एम दिस नॉन डेंस पर्सन एंड आई गेट यू, एंड यू डू डिबेट्स विद देम, दे आर इंटरेस्टेड। बिल्कुल। वो 75 लोगों में नहीं है, वो आप में है। आप एक चीज़ उनको दिखाओगे, आप एक हाथ हिलाओगे, वो 10 हाथ आगे से हिलाते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, 75 लोग, देयर इज डाइवर्सिटी। एग्जैक्टली। हाँ, आप कहते हो कि डाइवर्सिटी बाहर है, बाहर के मुल्कों में बहुत सारे कल्चर्स हैं, आप कहाँ से पढ़ते होगा? यस, लेकिन आपको एक मॉडल कॉलेज में डाइवर्सिटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ पूरा पाकिस्तान। आपको पठान, बलोच, डिफरेंट क्लासेस में भी, मतलब साथ कोई अपर क्लास का होगा, कोई मिडिल क्लास का होगा, क्योंकि जब अगर आप प्राइवेट में पढ़ते हो तो टोटली वहाँ पे एलीट क्लास होती है, या फिर बहुत नीचे आ गए तो मिडिल अपर क्लास होगी। लेकिन मॉडल कॉलेजेस में बहुत अमीर भी होते हैं और बहुत गरीब भी होते हैं। मतलब आपको स्टोरीज मिलती हैं। या वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन इवन लाइक ऑफ कैमरा, एंड आई वाज लाइक कि मेरे एक साइड पे एक ड्राइवर का बच्चा भी बैठा हुआ है, दूसरे साइड पे एक सेनेटर का बच्चा भी बैठा हुआ है। ये वही बात होगी ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो लाइक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बट इट्स काइंड ऑफ द सेम थिंग। लाइक तो लाइक I think that is something very different, and it gave me a lot of exposure. Basically, हाँ, ड्राइवर का बच्चा भी आपके साथ पढ़ रहा है, आप उसकी ज़िंदगी भी देख रहे हो, उसके अलग मसले हैं, वो भी आपके दोस्त हैं। और जो सेनेटर का बच्चा है, ऐसा नहीं है कि उसके भी मसले नहीं, उसके भी मसले हैं। बिल्कुल। And like the stark difference that you see in both those, वो जितनी आप डाइवर्स वो friendships बनाते हो, they last. I don't think I've bonded with any friends the way I've bonded with my model college friends. बिल्कुल। So वो शायद एज का भी होता है, क्योंकि अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो इस टाइम पे आके ना बंदा थोड़ा चूजी हो जाता है कि यार ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है। जो हम बचपन में दोस्तियाँ बनाते हैं ना, तो मतलब आप बैठे हो किसी के साथ and boom, you are friends. Definitely. And I think, yeah, again, like the diverse friendships, and yes, आपका अपना भी माइंड ये होता है कि यार दोस्त बनाओ. And that's another story for another time. But I think, and lastly, the third thing that, first of all, again, it was like the diversity. Second of all, like 75 बच्चों में पढ़ने का, like it was that, and हर किस्म का बंदा होता है। exactly, and your teachers are not as evil as they tell you, and के like a drama politics तो हर जगह पे होते हैं। Exactly. But it's like, and the third thing is leadership, like exactly. वोट लेना, स्टूडेंट बॉडीज में वोट लेना, उसको आप 20 बच्चा से ले रहे हो, 30 बच्चा से ले रहे हो, इट्स नॉट as anything as compared to जब आप 1000 लोगों की एक असेंबली चल रही है, 1000 बच्चों की एक ही असेंबली, उसी में आपने वोट लेने हैं। और उसमें मज़े की बात थी, जब मतलब मैं था, शायद आपको क्या पता एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, कि वहाँ पे मतलब पूरा ना टीचर घूम रहे होते थे, मतलब पुलिस नहीं घूम रही थी चलान के लिए, वैसे ही मतलब लिटरली आप हिलो जुलोगे भी ना बाहर आ जाओ। Exactly. मतलब वो उसमें भी एक अपनी खूबसूरती थी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे मतलब मुझे लगता है कि मॉडल कॉलेजेस का एक ही फ़ायदा है कि वहाँ पर डिसिप्लिन थोड़ा अच्छा सिखाया जाता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स। डेफिनेटली, बट लाइक फॉर मी इट वाज लाइक, अगेन हमारे तो भी मसले ही अलग होते थे। बाल कैसे बना के आ गई हो, बाल खोल के क्यों आ गई हो, ये वाली पिन्ने क्यों पहनी है, तो इट वाज लाइक नाखून बड़े, हील्स क्यों पहन के, हील्स नहीं, वो पंप्स क्यों पहन के, ये प्रॉपर जूते क्यों नहीं है, उसका भी अब पीछे देखते हैं, उसका भी अपना एक अलग मज़ा था। सो या, गेटिंग लाइक इन्वॉल्व्ड इन योर कम्युनिटी, in your college community leaves very many memories. And so yeah, like in my last year I was general secretary, and I had this whole council under me, and I was like, damn, this is good, this feels good. So yeah, leadership qualities, and I think they helped me a lot in my professional life and in my university life. And where did I get that from? I got it from a model college. अच्छा, I have a question कि अगर आपको मौका मिले पाकिस्तान छोड़ने का फिर से, तो
would you take that or not? Okay, so here's the thing. I love Pakistan as much as I do. I'm a very big culture enthusiast. I wouldn't leave Pakistan for the sake of कि यार मुल्क में रखा कुछ नहीं है. बिल्कुल. Because technically मुल्क में सब कुछ रखा है. मेरे माँ बाप ऐसे हैं ना, मतलब I'm close to my parents a lot. और my dad being a diplomat going to all those countries, he did not, मतलब 20 साल की उम्र में गाँव छोड़ के चले गए थे, ठीक है, पढ़ने के लिए आगे. And he came to Islamabad, he completed his studies, gave CSS, actually came one of the very high numbers in CSS back in the day. My dad is very aged, so I think he was anyways. So with all of that, his mother didn't get to see him as much, not at all. And on her deathbed she was like मेरा जो कमरा है वो खालिद को देना, उसने इस घर का देखा ही नहीं है, इस घर में बच्चे कैसे बड़े होते हैं. तो जब वो आएगा ना, एंड मेरे अम्मा पापा का भी ये है, दुनिया घूम ली बस, अब अपने मकाम पे आना है, अब अपने गांव में आके मकाम सिंधी में वैसे कब्रिस्तान को कहते हैं. सही. तो दफन तो अपने मकाम पे ही होना है. बिल्कुल. तो कहने का मकसद ये है कि फॉर मी इन दैट एस्पेक्ट, लाइक आई वुड ऑलवेज वांट टू कम एंड डाई इन पाकिस्तान, हैव माय टोम इन पाकिस्तान, हैव माय बट इन ऑर्डर टू बेनिफिट माय कम्युनिटी मोर and have that exposure, have that, and I think traveling and exposure just really does change you. So yeah, with the insight that I have now, with the वो जैसे मेरे अब्बा ने बात की थी कि बेटा अपनी मुल्क का कदर नहीं करोगी, तो अब the thing is कि मुल्क की कदर आ गई ना, now इस POV और इस point of view and being proud of who I am, my identity, and now going in the world with that point of view, it's worth it. बिल्कुल. यानी आपकी मतलब जिंदगी अब जो पहली बिनुफशीन थी उससे टोटली उलट है. अच्छा, तो खैर आजकल आपने शायद देखा होगा कि हमारे यहाँ मतलब कल्चर है ये कि जैसे मतलब लड़की का बैचलर्स ख़त्म होता है तो उसके मतलब जो मैं लास्ट ईयर यहाँ पे लेकर जा रहे हो. सही बिस्मिल्लाह. तो ख्वाब देखे जाते हैं कि यार हम ऐसे शादी करेंगे, मतलब लाइक यूँ समझ लें कि लड़कियों के लिए वो एक स्टेज होती है, उसके बाद आपकी शादी होनी है. तो और दूसरी मतलब इसमें कुछ मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं कि अगर आप देखें जैसे MBBS में काफ़ी लड़कियां आती हैं, ठीक है, और उनमें से मेरे अंदाजे के मुताबिक, मतलब मैंने कुछ स्टैट्स नहीं देखा, मुझे लगता है कि 20 to 25% तो इसलिए छोड़ जाते हैं कि उनकी शादी हो गई है और मतलब दे हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली. तो ज़ाहिर सीट्स आए होती हैं. तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? Again, I will link it to another story. वो जो मैंने की थी ना, another story for another time. It's so coincidental कि वो story यहाँ आ गया. So here's how I will put it. बेशक I have traveled the world. बेशक my dad has seen, my mom has seen, they've had exposure to a lot of different cultures and different identities and stuff like that. At the end of the day, you realize they are still Sindhi, they are still Pakistani. बिल्कुल. मेरी फैमिली में there were always 3 professions. डॉक्टर, इंजीनियर और आर्मी, डॉक्टर और इंजीनियर. कर लो इंजीनियर. अच्छा, हमारे गांव में वकील होता है, मतलब जो कुछ नहीं करता वो वकील बन जाते हैं. Exactly. So for me, my dad again being CSS basically. Sindhi CSS कैसे नहीं करेगा. But anyway, so my dad was a diplomat, one of the most respected people in the world, because back in his day he kind of topped CSS. So he was he's got a photographic memory actually. So हमने वो inherit नहीं की, काश कर ली होती. लेकिन ये है कि he's very good with उनको हम सिर्फ देख रहे होते हैं उनको constitution रटा हुआ क्यों है. How can he just go just like that? So anyway, so कहने का मकसद ये है कि within that framework, I was the first one, because medical sciences, it was law. It was law. लड़की हो डॉक्टर बनो. सारी लड़कियां पहले तो इसी के लिए चीज के ऊपर, फिर ना बना तो या तो कुछ और कर लो, या अब ये ट्रेंड आया कि BBA कर लो, या कुछ इस तरह की चीज कर लो. अब तो ICS का भी ऑप्शन है, तो आई गेस दैट्स अ गुड थिंग. मतलब एडमिट्स देते हो और Exactly. So, but me looking up to my dad so much and being influenced and looking up to my ideal and being a black sheep of the family. I don't like medical studies. I don't like maths.
Maths really caused me actual mental pain. And I went to my dad and I was like, Dad, I can't do this. हमसे ना हो पाएगा. हमसे ना हो पाएगा. And he was like, so what do you want to do? And this is one of the most crushing words that I've personally heard. तो क्या करोगी? Engineering? मैंने कहा नहीं. ACCA? नहीं. And then, you know, the second lastly, he was like, so what are you going to do? I'm like, I want to take art as a career because I like art. I want to do something creative is what I said to him. And he was like, so by profession, are you just going to be a teacher? And that honestly was the most crushing thing I've ever heard from my ideal from this person that I really look up to. And I was like, Dad, I won't be a teacher. I can promise you that. And I am going to figure out what I'm going to do, but I'm not going to be a teacher. Fast forward, I was one of the first people in my batches to start working. And I supported my own degree. Like being a girl, I supported my own degree. And I think I didn't find that. People found that fascinating. How are you working in your second semester? I was working in second semester. Like everybody's like, and you pay your bills and you pay your fee in second semester? I was like, yeah, I do. I am completely independent. And so that was a head turner, not only for people, but also for my family. In terms of like society के ऊपर अगर हम बात करते हैं, this was just my story. कि you know मेरे साथ तो ये हुआ. अब मैं डिटेल में चली जाती तो शायद उसकी इंटेंसिटी समझ आती, but you know people do understand. But I've seen so many people waste potential over this. मुझे इतनी कुफ्त होती है इस बात से, बीइंग अ गर्ल, मेरे आसपास मेरे अपने कज़न्स, अपनी दोस्तें, और मैं उनसे कहती हूँ व्हाट, लाइक टू द पॉइंट वेयर समटाइम्स आई गेट ऑफेंसिव टुवर्ड्स अदर पीपल. हो सकता है कुछ लड़कियों की अपनी ख्वाहिश होती है, भाई हमने आगे जाके शादियाँ करनी है. मुझे इतनी कुफ्त होती है, मैं पहले तो उनको, तुम्हारी दिमाग ख़राब है, तुम शादी कर रही हो अभी. That's just me opposing. तो like you know that kind of gets offensive, and that was वो call के like you know, hey, just because you have passions doesn't mean somebody's passion cannot be marriage. बिल्कुल. But if you have passion, I think this is a very वो thing. And about doctors की जो आपने बात की है, I read this post. It was based on a consensus. It was based on a survey, and like there was this guy that was saying to the parents who are setting their kids up for disaster by sending them to MBBS, realize that now there are no jobs in the medical industry. बिल्कुल. Because doctors ज़्यादा हैं, patients कम है. And like you know again वही वाली बात है कि patients अगर उस बात पे हो भी, आप बच्चे को especially private universities में आप करोड़ रुपया लगा के अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो टू डू व्हाट? 16,000 की 25,000 की सैलरी लेके वो जूनियर डॉक्टर बन के बैठ जाए, ज़्यादा लाइक 35,000. हाँ बिल्कुल इतना ही जाएगा. एग्जैक्टली, ज़्यादा 35,000. एंड लाइक यू नो अगेन लाइक प्राइवेट स्कूल्स में इट्स नॉट वर्थ इट एनी मोर, बिकॉज हाँ पहले होते थे डॉक्टर्स वर वेरी, बट वर्ल्ड चेंजेस, राइट? एंड आई थिंक द मोस्ट कॉन्स्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज चेंज. It's constantly evolving, right? So the thing is that we need to understand that some industries, some, you know, stuff are, and there's always going to be that. Maybe someday art is dead. Maybe someday I don't make money from that. Maybe from someday like e-com is dead. E-com वैसे अभी कब dead होने वाला है नहीं. अभी तो you know it's the starting, it's the next boom, yeah. So but ये है कि even then like you know there is a similar possibility कि when that dies. So my views on that is कि if they want to get married, let them get married. If they want to go and study and like you know go study georobotics or something like that, you are not like, सबसे ज़्यादा स्पेशली एक लड़की जो पूरे ज़माने से लड़ रही है, उसको टोका जा रहा है, जनरेशनल एक टोक आ रही है बाहर वालों से भी घर वालों से भी. पीपल डोंट रियलाइज हाउ मिसोजिनिस्टिक दे आर बीइंग. ठीक है, आप छोटी एक भी बात ऐसी भी बोल रहे हो ना, बेशक योर हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस, बट वो चीज़ भी ऑप्रेसिव नज़र आ सकती है. एंड इस बात पे लोग ये भी बोलेंगे कि यार यू नीड टू बी यू नो यू नीड टू स्टॉप बीइंग सेंसिटिव. इतना सेंसिटिव क्यों हो रहे हो? बट द थिंग इज़ कि वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? कहाँ कोई चीज़ मिसोजिनी है, कहाँ मजाक है? इतना फ्यूज़ हुआ हुआ है आपस में. सो बीइंग experiencing that on a daily basis, I feel like the support that we can get, the least support that will matter the most is the support from our families. बिल्कुल. अगर भाई देख रहे हैं तो यार अपनी बहनों को थोड़ा सा equal समझ लो. They are cognitive beings as well and they have so much potential. अगर parents देख रहे हैं, trust your daughters. Honestly, just do trust them. And because my father gave me the eye and I proved it to him.
he's the most proud father today. And like, you know, he's like, I'm the only person that's like, you know, and at this moment, like, you know, I'm not only supporting myself but also supporting my family. Being like, you know, single, it's not just ke like koi is tarah ki cheez hai, but the thing is ke if my father can see that, all of you can too. So yeah. तो आई गेस विद दैट हम गुफ्तगू का इख्तिताम करेंगे और मेरी टैगलाइन है डिज़ायर टू इंस्पायर। तो कीपिंग दैट इन माइंड और स्पेसिफिकली यूथ को सामने रखते हुए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? Desire to inspire. I think it's a very good initiative. And I think, you know, in my story, how I resonate with that is exactly my message right now. Because people didn't believe me, I made it my mission. I made it my desire to be an inspiration for someone. To be the one for someone कि अगर मैं किसी ऐसी फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड में गई हूँ, मेरे बाद मेरे ख़ानदान में किसी और को ये हिम्मत हो कि वो अपने पेरेंट्स के पास जाके बोले कि मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग करनी है, या मैंने मेकअप पढ़ना है, या मैंने लाइक यू नो कोई भी इस तरह की क्रिएटिव है, मैंने वीडियो एडिटिंग करनी है, मैंने मीडिया में जाना है. सो बिकॉज आई टुक दैट थ्रेश होल्ड, बिकॉज सो नाउ अदर पीपल कैन. सो या, डिज़ायर टू इंस्पायर. तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे पे एक नई इंस्पिरेशन के साथ, एक नई स्टोरी के साथ. तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखिए, और आई गेस दैट्स ऑल. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.